हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से चौका नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए रॉकेट इज़ फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स with speed of 2 km per second. If 20% of its initial energy is lost due to Martian atmospheric resistance, how far will the rocket go from the surface of Mars before returning to it? Mass of Mars 6.4 into 10 to the power 23 kg, radius of the Mars 3,395 km, g is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, 339 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, टू particles of the mass is 1 kg and 2 kg are placed at a separation of 50 centimeter, assuming that the only force acting on the particles are their mutual gravitation. Find the initial acceleration of the lighter particle. 0 meter per second square, 2.67 into 65 into 10 to the power minus 10 meter per second square, 5.3 into 10 to the power minus 10 meter per second square, 3.56 into 10 to the power minus 10 meter per second square. Question number 3, find the work done in bringing 3 particles each of mass 100 gram from the large distance of vertices of to the vertices of an equilateral triangle of side 20 centimeter. 1 into 10 to the power minus 11 minus 1 into 10 to the power minus 11, 0.33 into 10 to the power minus 11 minus 0.33 into 10 to the power minus 11 joule. Question number 4, the gravitational potential due to mass distribution is V A upon under root x square plus a square. Find the gravitational field. ऑप्शन है ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ए एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड नन ऑफ दीज. नाउ सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स with a speed of 2 km per second. If 20% of its initial energy is lost due to the Martian atmospheric resistance, how far will the rocket go from the surface of Mars before returning to it? Mass of Mars 6.4 into 10 to the power 23 kg, radius of the Mars is 3395 kilometer, g is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. 1000 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, 339 किलोमीटर, 550 किलोमीटर. जो इनिशियल स्पीड u 2000 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ रॉकेट इज सपोज m, रेडियस r is equal to 3395 10 to the power 3 meter. Initial energy, initial kinetic energy half m u square और half m into 2000 का स्क्वायर और 2m इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. Remaining kinetic energy after loss, that is 100 minus 20%, 80% of 2m 10 to the power 6 joule is equal to 1.6 m into 10 to the power 6 joule.
mass of Mars, suppose m, radius r, initially it is at point A. Potential energy at A, UA, is equal to minus gm m by r. Kinetic energy at A, 1.6 m 10 to the power 6 joule. Total mechanical energy minus gm m by r plus 1.6 m 10 to the power 6 joule. सपोज ये जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो यहाँ से सरफेस से बी पॉइंट पर पहुँचता है. मैक्सिमम हाइट इज ए बी एंड दैट इज एच. तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी वी बी यू बी विल बी माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच. काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो, तो ये टोटल एनर्जी के इक्वल होगा माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच. एम से डिवाइड कर दें तो जी एम बाई आर प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर प्लस एच. वैल्यूज़ पुट कर दें. जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. एम है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई आर 3395 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 is equal to minus 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6.4 into 10 to the power 23 by r plus h. Minus 12.57 into 10 to the power 6 plus 1.6 into 10 to the power 6 is equal to minus 42.688 10 to the power 12 by r plus h, or minus 10.97 into 10 to the power 6 is equal to minus 42.688 10 to the power 12 by r plus h, or r plus h is equal to minus 42.688 into 10 to the power 12 by minus 10.97 10 to the power 6. This comes 3891 into 10 to the power 3 meter, or 3891 kilometer, or h is equal to 3891 minus r, and 3891 माइनस किलोमीटर में ये 3395 496 किलोमीटर, और अप्रोक्सीमेटली 495 किलोमीटर. This B is correct option. Next, two particles of masses 1 kg and 2 kg are placed at a separation of 50 centimeter. Assuming that only force acting on the particles are their mutual
Gravitation. Find the initial acceleration of the lighter particle. 0 meter per second square, 2.65 into 10 to the power minus 10 meter per second square, 5.3 into 10 to the power minus 10 meter per second square, 3.5 into 10 to the power minus 10 meter per second square. एक पार्टिकल, इसका मास m1 and this is m2. Separation 0.5 meter. This is a particle, first particle, and this is heavier particle m2, and separation is r 0.5 meter. m1 is 1 kg, this is 2 kg. Force of gravitation on m1 will be towards m2. Suppose this is F, or force on m2 will be towards, attraction force only towards m1. This will also be F. Equal and opposite. तो F की वैल्यू होगी G m1 m2 by r square, and this will be equal to, अगर इसका एक्सेलरेशन a है या a1 है तो दिस विल इक्वल टू m1 a1. m1 से m1 क्रॉस हो गया तो a1 इज g m2 बाई r स्क्वायर. 6.67 into 10 to the power minus 11 into 2 by 0.5 का स्क्वायर. 6.67 into 10 to the power minus 11 into 8 into 10 to the power minus 11 meter per second square, or 5.3 into 10 to the power minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो a1 की वैल्यू आ जाती है a1, acceleration of lighter particle is 5.3 into 10 to the power minus 10 meter per second square. C is correct option. Find the work done in bringing 3 particles, each mass of 10 gram, from the large distance to the vertices of an equilateral triangle of sides 20 centimeter, 1 into 10 to the power minus 11 minus 1 into 10 to the power minus 11, 0.33 into 10 to the power minus 11 minus 0.33 into 10 to the power minus 11 joule. At large distance, PE is equal to U1 is equal to 0. How? These particles are brought to the vertices of a equilateral triangle ABC. इसकी साइड 0.20 मीटर, 0.20 मीटर. M of mass 100 gram or 0.1 kg. M2 is 0.1 kg and M3 is 0.1 kg. This is suppose R and R. Potential energy, final potential energy U2 minus G
m1 m2 by r minus g m2 m3 by r and minus g m1 m3 r. m1 m2 m3 आर इक्वल, तो ये हो जाता है -3 g m स्क्वायर बाई आर. -3 g है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. m की वैल्यू है 0.1 का स्क्वायर और r इज़ 0.2. -3 इंटू 6.67 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻2 बाई 2 इंटू 10⁻⁻1. 3.335 10⁻12 और माइनस 10.005 इंटू 10⁻⁻12 या -1.0 इंटू 10⁻⁻11 जूल. Net work done, that will be ut minus u1 and u1 is 0. So this is 1.0 into 10⁻⁻11 joule. 1.0 into 10⁻⁻11 joule. B is correct option. Question number 4. The gravitational potential due to a mass distribution is V is A upon under root x square plus A square. Find the gravitational field. Ax upon under x square plus A square whole to the power 3 by 2. Ax upon root x square plus A square. A upon root x square plus A square. None of these. So V is equal to A by रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ. दिस इज वी. ई होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा z k कैप. तो डेल्टा v बाई डेल्टा x होगा डिफरेंशिएशन ऑफ partial differentiation of this a x square plus a square minus की पावर हाफ, और डेल्टा अगर हम लिखें a x square plus a square हाफ बाई ये डेल्टा x विद रिस्पेक्ट टू x. ये आ जाता है माइनस होल टू दी माइनस ए इंटू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ -1 इंटू 2x प्लस 0 और माइनस हाफ ए इंटू 2x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 और माइनस ए एक्स बाई
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, क्योंकि इक्वेशन में वाई नहीं है तो दिस विल बी 0। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, for differentiation of with respect to a this is constant, hence इसका differentiation 0। Similarly delta v by delta z will be 0। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो e will be वेक्टर e is equal to माइनस डेल्टा v by delta x is minus ax upon एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डेल्टा v बाई डेल्टा वाई इज़ 0, डेल्टा v बाई डेल्टा z इज़ 0। तो ये आई कैप ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप वेक्टर e, और मैग्नीट्यूड ऑफ e इज़ ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। This A is correct option.